All right. Welcome everyone to one more session of hand holding. मेरे साथ welcome everyone. One second, one second. Right. So sorry. So background में वो channel चलने लग गया था. So once again. So welcome everyone to hand holding sessions. मेरे साथ हैं आरुष अरोरा सर from Adlitech. He is a SEBI registered RA of course, but उसके अलावा भी बहुत बहुत सारे qualifications hold करते हैं. तो सर why don't you take us through? मेरे को तो वो सारे नाम भी मैं ले पाऊंगा यानी I'm not sure जितने आपके मेरे को याद नहीं रहते एक साथ. Can you tell us something in brief about yourself, sir? Hi Vishu, good to be back with you on a podcast. So on this live stream. So basically, I'm a SEBI registered research analyst. I have my company, Adlitech Stock Market Research. We are there on adlitech.in. So basically, I have been in this market since last 10 years, more than 10 years. I started my journey of stock market when I was in school. तो बचपन से कर रहा हूँ मैं बहुत टाइम से टेक्निकल एनालिसिस प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड बाय क्वालिफिकेशन आई एम चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन आई हैव क्लियर्ड ऑल द 3 levels and I'm certified financial technician UK. Both these courses are considered gold standard in technical analysis. Then I'm certified financial planner and I'm postgraduate diploma in investment and financial analysis. तो मैंने मार्केट को हर तरीके से देखने की कोशिश करी है. आई स्टार्टेड माई जर्नी बाय रीडिंग बुक्स ऑफ वॉरेन बफेट. आई रियलाइज दैट फंडामेंटल एनालिसिस इज probably not my cup of tea, something which I don't enjoy doing so much because that was in school time. I knew very little about fundamental analysis, balance sheet, etc. Then I read about technical analysis. मुझे उसमें इंस्टेंट सक्सेस मिली. एक स्टॉक में मुझे 40-50% रिटर्न 1-2 हफ्ते में ही मिल गया. तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बड़े अच्छे पैसे बनते हैं इससे. सो आई मास्टर्ड ओवर देयर. मैंने 2 डिग्री सर्टिफिकेशन ली उसकी. और फिर मैंने आगे जाके FNO मार्केट मैच्योर हुआ तो डेटा रीडिंग समझा, डेरिवेटिव डेटा एनालिसिस समझा, इंस्टीट्यूशनल पोजिशनिंग समझा. और इसी जर्नी में बहुत सारी फेडरल रिजर्व की न्यूज़ भी आया करती थी कि सेंट्रल बैंक ने कुछ एक्शन लिया, उसकी वजह से इंडियन मार्केट में कुछ इम्पैक्ट हुआ. तो मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स समझा. मैंने बुलियन मार्केट्स भी ट्राई किया. तो गोल्ड सिल्वर बहुत फ्लक्चुएट करते थे. तो वही मैंने समझा कि क्यों एक्चुअली डॉलर के एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन से कमोडिटी मार्केट में कुछ हो रहा है. तो मैंने इंटर मार्केट एनालिसिस समझा. एंड रिसेंटली काफ़ी डेटा एनालिसिस चल रहा था, मैंने उसको समझा. तो मैंने मार्केट को बहुत एंगल से समझने की कोशिश करी है. फिर न्यूज़ भी, आजकल न्यूज़ फ्लो के भी इम्पैक्ट की काफ़ी अहमियत हो गई है कि ये न्यूज़ आएगी तो क्या होगा. कई बार हम देखते हैं कि रिजल्ट अच्छा आता है बट स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं करता है. न्यूज़ नेगेटिव होती है बट स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करता है. तो मार्केट में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं. रैंडमनेस क्रिएट होती है जिसकी वजह से. तो हम लोग को एक जर्नी के थ्रू जाना पड़ता है जहाँ पे आप अपना सॉलिड सिस्टम बना सके, समझ सके कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपके नेचर के हिसाब से क्या वर्क करता है. आप कोई स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड कर पाते हैं कि छोटे समय में ही आपको अंदर से एंजाइटी होती है कि चलो थोड़ा सा गेन मिल गया, स्टॉक को बेच दे. क्या आप अपने विनर्स को राइड कर पाते हैं कि नहीं. बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती है. एक चीज मैंने नहीं बताई, जो खुद का इमोशनल क्वेश्चन होता है या खुद का इमोशनल बैलेंस बनाना पड़ता है. बाजार में डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ता है. सब कुछ पढ़ने के बाद एक बार डिसिप्लिन भी बनाना पड़ता है. जो सीखा है असली में बाजार टेस्ट करता है उसको, क्या आप उसको फॉलो कर सकते हैं कि नहीं. तो मैंने 10 साल में सब कुछ अपने सिस्टम में बिठाने की कोशिश करी है, उसको मास्टर करने की कोशिश करी है और एंड में डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करी है. सो दैट्स बेसिकली माय बैकग्राउंड. नाउ आई डील इन ऑल द सेगमेंट्स: इक्विटीज, कमोडिटीज, करेंसीज, futures, options, international market, and I cater to a lot of HNI clients in India and even outside India. सो अभी पर्सनली मुझे लगता है कि ऑप्शन सेलिंग एक बहुत अच्छा सेगमेंट है जहाँ पे हमारी बहुत अच्छी मास्टरी है. Right. Awesome. Awesome. Thank you for that intro, sir.
Before we begin to the actual meat of the topic, शोभा जी के बहुत बहुत सारे comments आ रहे हैं about IRFC. Incidentally, आज ही सुबह कॉल था, so शोभा जी आपके इतने सारे comments हैं. Before that, we will avoid stock specific discussions in this session because it's more of a learning session. But शोभा जी सुबह ही आप IRFC जो पूछ रही हैं, I think उसका buying range was 142 to 146, target was 158, stop loss 139, time frame 14 days. ये सुबह research से कॉल था. So hope that qualifies your query. We won't be able to take any more stock specific queries in this session. Getting to the knowledge part of it, the education part of it, आज सर हम लोग सर से सीखने वाले हैं तीन चीजें which are around technical trading, charts के around. Fibonacci we'll learn what is that, RSI we'll learn, and trend lines we'll learn. Right, sir? Absolutely, absolutely. We'll go through the basic tools of technical analysis जो हमेशा ही वर्क करते हैं, ज्यादातर वर्क करते हैं, क्योंकि बाजार में कुछ भी शॉर्ट नहीं होता, बट इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. बट दीज टूल्स enhance your probability of winning. Right, right. Awesome. So, sir, we are here to learn. Thank you so much. Please go ahead, sir. Absolutely. देखिए, we'll talk about Fibonacci first of all. Fibonacci इंडिया में ही ओरिजिन हुआ था बहुत पहले, जब वर्ल्ड ने डिस्कवर नहीं किया था. ऑल्दो इंडिया के क्रेडिट में वो चीज नहीं आती है इंटरनेशनल पेटेंट और सब में, बट इंडिया में ही डिस्कवर किया गया था फिबोनाकी पैटर्न्स. हम देखते हैं कि कैसे हमारे पहले के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें जो ज्योमेट्री है, उसमें आप ये सब देखेंगे 50 साल पहले, 100 साल पहले, और ऐसे मॉन्यूमेंट्स है जो सालों साल पुराने हैं. तो तब तो ये डिस्कवर भी नहीं हुआ था, ज्योमेट्री डिस्कवर नहीं हुई थी प्रॉपर तरीके से, और काफी सारे फॉर्मूलाज है, ये सब तो रिसेंटली डिस्कवर किए गए. बट हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है 100 साल पुराने, 200 साल पुराने, 400 साल पुराने, और ये सारे पैटर्न्स आपको वहां देखने को मिलते हैं. बट फिबोनाकी होता क्या है? फिबोनाकी सीरीज होती है, अगर आप 0, 1, 2 इस सब को ऐड करते हैं तो 0+1 आपका आता है 1, 1+2 आता है 3, 3+2 5. इस तरीके से आप ऐड ऑन करते जाएंगे नंबर आफ्टर नंबर, तो आपको एक पैटर्न ऑफ नंबर्स मिलेगा, राइट? आप जब इसको डिवाइड करेंगे प्रेसिडेंस इससे पहले वाले नंबर से, तो आपको एक 0.68, 1.68 इस तरीके से नंबर मिलेंगे. ये नंबर की बहुत ज्यादा अहमियत है. अगर आप इसमें स्पेस रिसर्च की बात करें, वहां पे भी यूज होती है. डिजाइनिंग की बात करें, वहां पे भी यूज होती है. और आप सरप्राइज हो जाएंगे, स्टॉक मार्केट में भी इसकी बहुत अहमियत है. So in stock market, the number 0.68, 1.618 is very important. Markets usually, try to find support and resistance at these important figures. Although the series has other numbers also, like 0.23, 0.38, 0.50, 0.618. I'll show you. For example, this is start of Nifty, right? I hope you all can see the screen. Yes, sir, it's visible, sir. Yeah. So this is start of Nifty. For example, how you have to use this tool is that on the left corner of the screen, you can find all the tools over here. You have to select the second one. You can see over here Fib retracement, Fibonacci retracement. So what you have to do is that you have to connect a swing low and a swing high to get these Fibonacci numbers. So I'm selecting this Fibonacci low, which is 44,451. And now I'll connect to this top, which is 48,150. Look, I'm almost keeping at the same point, 48,150. I'm keeping on the left corner so that you can read the numbers over here. What you can see over here is that 0.23, 0.38, 0.5, 0.61, 0.78. These are important Fibonacci numbers, right? As we discussed previously, these are the Fibonacci numbers, and they are applicable to stock market also. Just like designing, they are also present in sunflower. They are present in different, they are also present in human face. Why does a human face looks beautiful? Because there's a Fibonacci pattern that makes it beautiful. That is on the creative side.
But on the numerological side, on the logical side also, Fibonacci numbers are equally applicable. I'm taking it on the left side, so you can find how market has beautifully taken support at Fibonacci number. Look, I had drawn this Fibonacci series from the low of 44,450 to 45,150. You can see that market Bank Nifty took exact support at 0.61. Just 5 minutes back, I had told you that market takes important support at these Fibonacci numbers. Fibonacci number 0.61. Look, Bank Nifty has taken support exactly at this 0.61 figure, which is 45,867. And the low over here was 45,828. Look, from there, Bank Nifty shot up till 46,840. So that gave you almost 800 points. You don't need to go anywhere to find market kya lagta hai, to understand market kya lagta hai, right? And this is not one instance. You can find this at many places. For example, I haven't seen exactly, I haven't cross-checked the numbers. I'm doing this study with you spontaneously because I've seen in the past, it usually works. It's important to consider that all the studies in the market are on probability basis, not on certainty basis. That means that any study will not work 100% of times. There's no such formula in the world wherein you put any trade and 100 out of 100 trades will work. Some trades will go wrong for sure. Similarly, some strategies, some tools will go wrong for sure. So let's draw Fibonacci. Let's draw Fibonacci retracement again from another important support, swing low, which is around 23rd October 2023. Let's take it from there to this is in December 25 December 2023. That was the high for Bank Nifty. Let's draw it over here. Look, where did market take support? If you can read, this is 0.23, this is 0.38, this is 0.50, this is 0.61. I didn't know that market, will take support here only. I just discussed about a study which I had seen in my last 10 years. And it usually works. And look, here market has taken support at this point only. Bank Nifty took support at 44,588, and from there Bank Nifty shot up till 48,000. So this study itself gave you 3,500 points in 1 month or 1.5 month. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है पूछने के लिए मार्केट क्या लगता है, right? So this basic application of Fibonacci. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है और आपने देखा कैसे ब्यूटीफुली वर्क किया. तो आपको बाजार में सर्च करना है कि कब कौन सी प्रोबेबिलिटी प्ले आउट कर रही है. आप अगर उसको प्रॉपरली प्ले कर लेते, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करते, टारगेट के साथ काम कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स इंटरनेशनली जो साल का 100%, 200%, 500% भी बनाते हैं. दोज आर लेजेंडरी ट्रेडर्स, बट दे डू दिस. हाउ डू दे डू दिस? Obviously they are not doing insider trading. तभी इंसान ऐसा बना सकता है. या तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका टेक्निकल एनालिसिस ही है. टेक्निकल एनालिसिस टेल्स यू पल्स ऑफ द मार्केट, टेल्स यू अबाउट इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स कि इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत पैसा है. FIs usually play with about 5,000 crores in cash market. अभी कल ही फिगर था 4,000 crores FIs ने बेचा, 4,000 crore DI ने खरीदा. So they are playing with such kind of money and they have the power to influence the market. All you have to do is that you have to follow footprints of institutions. If you follow footprints of institution, you usually will make money, because when they are putting so much money, obviously they are doing it to make money. And if they have so much of money, they have such kind of connections, such people at their work, at their workspace, which have such expertise to understand the market. They are trying to understand market from various angles. जैसा मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग में इंट्रो में बताया था कि बाजार के बहुत सारे एंगल्स हैं. बाजार एक चीज से नहीं चलता है.
जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई, फिर व्हाट आर द सेंट्रल बैंकर्स डूइंग, what policy will have what kind of impact, what kind of currency fluctuation will have what kind of an impact. Recently, we saw INR depreciation in the last week, significant INR depreciation, right? So such activities influence the market. तो बाजार का एक एंगल नहीं है, बहुत सारे एंगल है, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, करेंसी मार्केट फ्लक्चुएशंस, इंटर मार्केट एनालिसिस, कमोडिटीज का बाजार पे क्या असर है, पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिक्स में कौन से, देर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट टुडे हु आर जॉइनिंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, अगर आप देखें तो उनके शेयर्स भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. इलेक्शन इज अराउंड द कॉर्नर. What is the impact of election on market? We saw that recently when BJP won election in 3 states, market shot up significantly. जो हमने बाजार में ये रैली देखी थी बैंक निफ्टी की, वो इलेक्शन जीतने के बाद ही आई थी. 3 states जब बीजेपी ने जीत लिए थे, विच इज द रूलिंग पार्टी राइट नाउ. सो पॉलिटिकल डिसीशंस का भी बाजार में इतना इम्पैक्ट है. देन व्हेन a leader goes in another country, कौन से इंटर कंट्री पैक्स साइन हो रहे हैं, डील साइन हो रही है, जैसे अलॉट ऑफ डिफेंस डील्स आर साइन, तो इससे इंडिया की डिफेंस कंपनी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है. साइबर सिक्योरिटी पैक्स आर साइन, उससे इंडियन मार्केट में क्या एनालिसिस हो रहा है. इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल्स कैसे चेंज हो रहे हैं, कंपनी के कोई सेक्टर एक सनराइज सेक्टर है, जैसे कि लोग बातें करते थे एआई सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कार सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कार्स का सेक्टर. देन वी पीपल टॉक अबाउट न्यू बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज, बिकॉज ऑफ दैट. बीच में China+1 थीम था, फिर कोविड के बाद आईटी का थीम था, तो अलॉट ऑफ थीम्स आल्सो डेवलप. तो इतनी सारी चीजें एक समय पे चल रही हैं कि यू नीड टू हैव सम स्पेशलाइजेशन. So institutions have that specialization. You have to simply follow them. They are playing with big money. You have to follow them, and that is very much possible through technical analysis. ऐसा बहुत बार हुआ है हिस्ट्री में कि आई हैव डन सम प्रेडिक्शंस इन द पास्ट, लाइक मैंने कोई स्टॉक का टॉप बताया है, फिर बाद में इंस्टीट्यूशन का सेल कॉल आया है, मैंने कोई स्टॉक का बॉटम बताया टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, और कोई ब्रोकरेज हाउस का उस पर बाय आया है. सो ये सब क्या होता है, क्योंकि वंस अ मनी इज चेजिंग समथिंग, तो ब्रोकरेज के भी बाय आएंगे, वहां पे मैनेजमेंट कमेंट्री भी आएगी, वॉल्यूम्स भी जनरेट होंगे. सो वंस मनी स्टार्ट्स चेजिंग समथिंग, कहीं कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, एंड दैट इज बैक्ड ऑन सम पॉजिटिव न्यूज, लाइक लेट्स से इंडिया ने कोई डील साइन करी. So there are fundamental changes that revenue will grow of that sector in let's say 5 years. तो वहां पे बहुत सारा मनी चेज करता है, and you can see multi-baggers in that space. So you need to understand market from various perspective. If you can't do that, technical analysis can do that for you, because technical analysis is sum of a lot of variables. So that's summation of that. Moving on to another, tool, basic tool, which is Trendline. So let's try to understand Trendline over here. आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन में आपको क्या करना होता है, जो स्विंग लो और स्विंग हाई होते हैं उसको कनेक्ट करना होता है. जो बॉटम बन रहे हैं आपके बहुत टाइम के, उसका आप अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आपको एक क्या कहते हैं कि स्टैटिस्टिक में कहते हैं कि यू डू सम मॉडलिंग सो दैट यू कैन एंटिसिपेट द फ्यूचर फिगर. सो दैट दिस इज graphically drawing probability. Trend lines draws probability graphically so that you can understand the trend. Let's draw the trend line and practically understand this. जैसे मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी के लो को कनेक्ट किया 23 अक्टूबर, और मैं इसको अगर ये स्विंग लो से कनेक्ट करूं, तो आप देखेंगे ये प्रीवियस वीक का लो एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे ही था. क्या मार्केट को पता था ऐसा होने वाला है, या मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ मैजिक इज, हमने यहाँ से सिर्फ ट्रेंड लाइन बनाई, तो when we were standing on 22 Jan, did we know that somewhere down the line when prices will touch this trend line, they will bounce off sharply from that? We didn't know on 22nd Jan 2024. But when actually market touched this trend line on 18th March at 45,850, it bounced off
to levels of 46,700. How beautifully does that work without any complication? These are some basic studies, although there are more than 4,000 studies in the market. Everyday market is evolving, but we are discussing some basics, and you can see that how market respects these things. Let's try to understand few more examples. So look, there's one more example over here. Let's try to draw a trend line and see if this works or not. We'll connect this swing low. We can connect it to this line. We can connect it to this line. These are two important support levels. Look. Look, if we draw this trend line, then market again beautifully took support at this trend line. When we were drawing this trend line from this point to this point, this is 21st Jan 2020, and this is 25th Jan 2021. Did we know that somewhere down the line in 2022, this trend line would be respected? But this is 25th Jan 2021, and this is 20 December 2021. Market took support over here. Bank Nifty took support at 34,350, and from there Bank Nifty shot up to 38,660. So how much points are these? 4,500 and almost 4,000 points. That is 12% on Bank Nifty. That's huge. That is almost equivalent to 1 year return for index. Long-term average return of Nifty is 12%. So that you got those kind of returns in just 3 weeks by simply drawing this trend line. Very simple, very easy to follow, and that gave you handsome money. So this is how trend lines work, and similarly, when trend lines are broken, you get a momentum on the side on which the trend line is broken. So over here, if you draw, we further extend this, then you can see that this trend line was broken over here. This trend line was broken over here. So once this trend line was broken at 35,097, this fell up to 32,160. Again, market tried to breach this trend line, and again, this was broken at 35,840. Again, from that point, market fell till 33,000. Again, it gave you 3,000 points over here and about 2.5 thousand points over here. You got 5,000 points on this side. So these are some magnetic zones, some important pivot levels, which give direction to the market. Market is usually oscillating between different pivot zones, and if those zones are breached, you get a different direction. And market is very dynamic. On basis of this trend line itself, you can get an uptrend. On basis of this trend line, you can get a downtrend. So there are many angles to it. You have to understand it from various lenses, like technically also, and you can also see a lot of news flow at that point, which will give you some added hints on which side market could break. Right? So that's how this trend line works. Vishu, are these 2 points clear for our audience? Yes, perfectly clear, sir. Audience, if you have any questions around these, we have one more strategy to go, one more indicator to go. So if you have any questions about these two things that we studied, one was trend lines, the other was Fibonacci. So please do put them in the comments. We'll try to take them up.
जो स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज एंड ट्रेड्स और इंट्राडे के आ रहे हैं सर, दैट इज दिस इज नॉट अ लाइव मार्केट सेशन, दिस इज मोर ऑफ अ एजुकेटिव सेशन विद आरुष सर। हमारी लाइव एक्सपायरी कल और परसों हमारी रिसर्च टीम के साथ होगी, वहां पर आपको ट्रेड्स मिलते हैं। दिस इज फॉर लर्निंग पर्पसेस। So if you have any questions around these two, please put them down in the comments. Sir, yes, please, let's go ahead. Hmm. So we'll try to understand stochastic RSI. Okay, this is an oscillator. This is a lagging indicator. You can make it a leading indicator with little changes in the variables, numbers, parameters, and what you can do is that you can find the trend through candlesticks. Oscillators usually follow the candlesticks and they avoid the noise. They remove the noise and they give you a clear-cut direction. For example, let's try to understand one trend over here. So once this blue line cuts the orange line, the trend is bullish. And once this blue line cuts the orange line on the downside, that's a negative crossover. And once it cuts on the upside, it's a positive crossover. So it will give you a clear-cut direction of the trend. So over here, blue line has moved above orange line, and at this point, Bank Nifty was trading at 42,782. At this point, the crossover was about to happen. In the next candle, the crossover actually happened. And at this point, the price was 43,138. And this helped you write the complete trend from here to here. And then it gave you sell at this point. And the price was 48,194. You got sell at 48,150 and you got a buy at 43,347. So you got almost 4,500 points in Bank Nifty. Just a simple oscillator which gave you a clear-cut direction of the trend. It showed you that the trend is now turning up from the downside. Look, when the market was going down, it had it had a closing below the orange line, right? It's a blend of stochastic and RSI 2 oscillators, and you can see the trend was clearly pointed towards the downside. And when this happened, you got a clear-cut downside. And when it was breached on the upside, you got a clear-cut upside. And again, when it was, you saw negative crossover here. You saw Bank Nifty going down from 48,100 to 46,300. So you got about 1,700, 1,800 points over there, right? Awesome. Awesome. Right. So that's the role of oscillator. Awesome. सर कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास। वन इज क्या हम लोग फिबोनाची इंट्राडे में ड्रॉ कर सकते हैं? क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते? These are some of the universal tools which you can apply in intraday, in 1 hour, in 4 hours time frame, in 1 minute time frame, right? In 15-minute time frame, in 1 month, 1 week, 1 year, 1 decade as well. Right. Awesome. Awesome. Yeah. नेक्स्ट इज सर फिरोज जी का क्वेश्चन है कि विच टाइम फ्रेम इज बेस्ट फॉर ट्रेंड लाइन? Trend line. Look, it's like, what do you like to eat with parathas? Do you like to eat with curd or do you like to eat with achar? So there's no fixed formula in the market, right? Certain stocks have a volatile nature and certain stocks are stable. For example, we know certain stocks which were associated with Hindenburg and they have a very volatile nature.
margin for such stocks is as high as 50%, 70%. Telecom companies, penny stocks over there have margin as high as 50%, 70%. But certain FMCG counters are very stable, trading about 10,000 rupees, trading about 2,000, 5,000 rupees. They have a very stable nature. So the margin over there is less. Nature of stock is range bound. So you have to, try to first select a basket of stocks which are respecting, you had a question regarding oscillator or trend line. This is around trend lines sir कि trend lines पे कौन सा time frame works best? ट्रेंड लाइन पे कोई भी टाइम फ्रेम वर्क करता है. You can work on 15-minute time frame, 30-minute time frame. But when it comes to oscillator, you need to check the volatility of a stock. Right. Trend lines work everywhere. Awesome. मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रेंड लाइंस वर्क करते हैं टाइम फ्रेम में. Right. Right. Sir, next question is for RSI. इसमें are these default settings that you have applied, or are there any modifications you have done to this stochastic RSI that we saw? This is the default setting, but you can fine tune it as per your back testing, as per the nature of the stock. You need to do little research on your own for that. Right. And the time frame for RSI, sir? As I was discussing previously, although these are universal tools, but to get perfection, you need to do little bit modification as per the nature of the stock, volatility of a stock. But you can work with them on daily time frame, weekly time frame, 30-minute, 1 hour, etc. सो एसेंशियली कुछ लोग हिंदी में भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो टाइम फ्रेम के लिए ऐसा है, आपने डेमो तो देखा ही, टाइम फ्रेम के लिए ऐसा है कि स्वादानुसार आप जो चार्ट स्टडी कर रहे हैं उस पर अलग अलग डाल के देखिए एंड देन पीछे देखिए कि हिस्टोरिकली कौन से टाइम फ्रेम पे आपको बेहतर ट्रेड्स मिलते हैं. बहुत छोटा टाइम फ्रेम होगा तो वो इतनी नॉइस आ जाएगी कि आपके ट्रेड्स वर्कआउट नहीं कर पाएंगे. आपको दिखेगा वो चार्ट्स में, थोड़ा सा होमवर्क आपको भी करना पड़ेगा. एंड एट द सेम टाइम बहुत लंबे होंगे तो भी कुछ शायद उतना मार्जिन ना मिल पाए. तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा depending on the chart you are seeing, you'll have to find out for yourself. बिल्कुल स्वाद अनुसार. अगर आपको पेरी पेरी चाहिए, स्कैल्पिंग चाहिए, तो क्विक गेट इन गेट आउट करना पड़ेगा, वैसे स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे, टाइम फ्रेम वैसा सेट करना पड़ेगा. बट आप थोड़ा सा चीजी लवर हैं, थोड़ा सा मायनीज लवर हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म वाले पसंद है कि स्टैग्नेंट स्टिकी, तो थोड़ा सा उस तरीके के स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम वर्क कर रहा है, 1 hour 2 hour etc. Awesome, awesome. Well, this was an amazing session, sir. Thank you so much time निकालने के लिए हमारे साथ, questions भी हमारे सारे answer करने के लिए. We'll be back with more such chart-based educative sessions as well. Please do write in the comments which other indicator you'd like to see. And if this was useful, तो please उसके बारे में भी कुछ अच्छा से 2 शब्द लिखिएगा if you like this session and share it with the people you know. Thank you so much again, Aditya sir, for joining in. Thank you, audience, for being with us for this session. Thank you, Vishu. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from ICICI Direct.